So we were discussing the seerah of the Prophet ﷺ as a diplomat, and we've done quite a few of these: Harb al-Fijar, Half al-Fudul, emigrations to Abyssinia, visit to Taif. The next thing is the pledges of Aqaba. The pledges of Aqaba are basically a few pledge कहते हैं वादे को, वादे जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिए थे मदीना के लोगों से। उस वक्त मदीना का नाम था यथरिब। तो मदीना का नाम यथरिब था। मदीना के लोग जो थे वो हज के वक्त जब आते थे तो वहां पे एक रास्ते से में एक जगह आती थी, उसका नाम था आकाबा। तो आकाबा में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको तबलीग करते थे इस्लाम की। तो एक साल उनमें से कुछ लोगों ने जब रसूलुल्लाह की बात सुनी तो उन्होंने कहा कि आप हमारे साथ मदीना आ जाए, यथरब आ जाए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने did not go with them and said that next year bring other people, your elders, you bring them along. They came the second year and the elders came and Rasulullah talked to them about Islam, and they said, Rasulullah, you should come to Yathrib. And Rasulullah took a pledge from them, a promise from them, that they would come back next year with even more people. The third year, a lot of people came from Medina, came from Yathrib, and they took a pledge in Aqaba of protecting Rasulullah sallallahu alaihi wasallam if he migrated from Makkah to Medina. This shows us a lot of things. This shows us how the Prophet was very cautious, very careful before he would leave his home, even though he was being persecuted in Makkah, but he did not just randomly go to Medina. Kisi ne bulaya aur wo chale gaye. This shows us, as a rule of diplomacy, that what we say in English, look before you leap. So we see this with the pledge of Aqaba, that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam made sure that this condition in Medina was welcoming before he actually did leave Makkah. So that is what we learn from the pledges of Aqaba. Then from the biography of the Prophet, we see a huge diplomatic role that he played when he was migrating from Makkah to Medina. We see a lot of very small things, such as he did not enter Medina straight away, but he stopped at the village of Quba before he entered Medina to see if people were welcoming him, if people were happy with his arrival, what was the situation on ground. So he did not just walk into Medina. He stopped outside Medina to give everyone time. If there was any problem, then he should be made aware of it. So he used to have that strategic gap and strategic movement, which we learn from the migration to Medina after that, so that people will not fight with each other about where the Holy Prophet should stay, or people should not be offended, so that he does not violate any customs of Medina. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam did not decide where he would stay. He let his camel, Kaswa, I think was the name of the camel, he let her roam around, and wherever she stopped, he decided to purchase that land for Masjid al-Nabawi, and where he would stay, what he did, he was very culturally sensitive to the people of Medina. He did not immediately start enforcing the traditions of Makkah or the religion of Islam. In fact, he gave them some time so that they could adjust to the new situation. So we see that. Further, we see that he made every Muhajir a brother of every Ansar, which means that we learn about the diplomacy of the Prophet, that he made sure that the emigrants were not left helpless. So he made sure that the Muhajirin, the emigrants from Makkah, were not helpless. In fact, he made sure that they were well settled into the society of Medina, culturally, financially, socially, in all these ways, by making them brothers with the people of Medina, in an event that was called the Mawakhat. The Mawakhat of Medina, the brotherhood of Medina. Further, when we see him setting up the state of Medina, we see a huge number of diplomatic master strokes, जिसमें सबसे बड़ा ये कि मदीना में उस वक्त जूस के तकरीबन 3 कबीले रहते थे। इन तीनों कबीलों की मुसलमानों के साथ लड़ाई का चांस था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह उनको कन्विंस किया कि वो मुसलमानों के साथ मिलके एक कॉन्स्टिट्यूशन बना लें, जिसका नाम हमने रखा मीसाक़े मदीना। तो मीसाक़े मदीना जो है, मदीना तैयबा जो है, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बनाया, जिसके अंदर यहूदियों और मुसलमानों को एक उम्मत करार दिया और किस तरह से यहूदियों के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डिप्लोमेसी शो करता है। What we learn from this is that when you go to a new place, or when you make a peace treaty, or you make a misaq, or you make a constitution, make sure that you respect everybody's rights, and make sure you include everybody's opinions, and that you are sensitive to their opinions. These are all lessons that we learn from setting up of the state of Medina. Then about diplomacy of the Prophet, we learn how he brought innovation in diplomacy.
Before Rasulullah, what used to happen was that if there were any prisoners of war after any battle, they would be let go after they paid a ransom. वो पैसे देते थे और उनकी आज़ादी रिहाई हो जाती थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसमें इनोवेशन ये की कि आप पैसे जो नहीं दे सकते वो हम मुसलमानों के बच्चों को तालीम दे दें। तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर वो मुसलमानों के बच्चों को तालीम दे देंगे तो फिर भी हम उनको एक जो है वो जाने देंगे। तो ये एक ट्रीटमेंट ऑफ प्रिजनर ऑफ वॉर जो है ये एक इनोवेशन थी डिप्लोमेसी में जो रसूलुल्लाह ने की, और उसका अंजाम ये हुआ कि जितना अच्छा प्रिजनर्स ऑफ वॉर को मुसलमानों ने ट्रीट किया कि उनमें से वापस जाकर कई प्रिजनर्स ऑफ वॉर जो हैं वो मुसलमान हो गए। वो मुसलमानों के किरदार से बहुत मुतासिर होते थे। तो ये किरदार से दूसरे दुश्मन को इतना अच्छा ट्रीट करना कि वो आपके किरदार से मुतासिर हो जाए, दिस इज अ डिप्लोमेटिक प्रिंसिपल that we learn from the Holy Prophet. Then we learn about the Treaty of Hudaybiyah, how the Holy Prophet, this is very difficult to make this treaty. There were rumors that Hazrat Usman had been killed, and then the Meccans came for negotiations. They did not want to negotiate, and for example, there was this one point when in the treaty there was written Muhammadur Rasulullah, and the Meccans did not want to. They said, cut off the name word Rasulullah, and the Muslims were very angry. They said, we can't cut the word Rasulullah from the name of Muhammad Rasulullah. And the Meccans said, we will not do the treaty if you don't allow this. The diplomatic masterstroke of Rasulullah was that at that point he understood that what is more important is that we do this peace treaty. And this peace treaty was one that would give, number one, it would give recognition that Meccans and Medinans were equal. That is why they were doing a peace treaty. Number two, this would give Rasulullah 10 years of peacetime to spread Islam. Number three, it would secure the right of Umrah for the Muslims. Number four, it would allow Muslims and Meccans to not engage in hostilities, and to actually it would give a chance for Meccans to see what the Muslims did. Because next year when Rasulullah came for the Umrah and they performed the Umrah, the people of Makkah, before that they had just heard from people for the last 7-8 years. They were just hearing कि मुसलमान ऐसे होते हैं, मुसलमान वैसे होते हैं, अजीब अजीब बातें उनको बताई जाती थी। Hudaybiyah की treaty की वजह से the Meccans got a chance to actually see what the Muslims believed and how the Muslims practiced Islam. So this was something that was very important, that the people of Makkah were for the first time seeing how the Medina state was working, how the people of Medina were actually practicing Islam. So ये चीजें सारी जो थी ये हमें हुदैबिया की ट्रीटी से मिली, और इसको कुरान ने, मैंने पहले भी अर्ज किया काफी दफा, इस सुलह को फतह मुबीन कहा गया, द ग्रेट विक्ट्री, फतह मुबीन। तो हम उससे ये सीखते हैं कि रसूलुल्लाह की ये भी डिप्लोमेटिक जो है मास्टर स्ट्रोक है, उसका एक नतीजा था। फिर उसके बाद जब इस ट्रीटी को खत्म किया तो रसूलुल्लाह ने खत्म नहीं किया इसको, जो कुफार थे उन्होंने, मक्का के लोगों ने अपने एक इत्तेहादी के साथ, they combined with their helped one of their allies attack an ally of the Muslims, and the leader of the tribe which was allied to the Muslims was killed in the Haram. So when this news reached Medina, Rasulullah gave the Meccans an ultimatum to renew the treaty. The Meccans rejected that ultimatum. Rasulullah went for war. Once Rasulullah had gathered the troops and gone for the war against Makkah, then the Meccans said that now we want peace once again, and Rasulullah said no peace anymore, which shows us how a diplomat needs to be soft and peaceful in some situations, and how a diplomat has to be staunch in some other situations, how you need to hold on to your principles as a diplomat. So how diplomacy of principles जो है ये हम रसूलुल्लाह से सीखते हैं, और जो सेवरिंग ऑफ हुदैबिया का उससे भी बड़ा हमें एक लेसन मिलता है वो है सपोर्ट ऑफ एलाइज, कि अपने एलाइज, अपने इत्तेहादियों को आपने अकेला नहीं छोड़ना। अगर उस वक्त रसूलुल्लाह हुदैबिया की ट्रीटी को रिन्यू कर लेते तो एलाइज को ये मैसेज जाता कि मुसलमान जो हैं ये अपने एलाइज का साथ नहीं देते। तो उस वक्त आपने ये मेक श्योर किया कि आप हुदैबिया की ट्रीटी को दोबारा नहीं करेंगे, ताकि आपके एलाइज जो हैं वो उनको ये तसल्ली रहे कि मुसलमान अच्छे एलाइज हैं। आखिर में यह है कि जब आप मक्का की फतह देखते हैं तो उसमें एक तो हम ये कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको माफ कर दिया, तो ये अमन पसंदी का सबूत है। अगर रसूलुल्लाह चाहते तो मक्का के सारे लोगों को कत्ल कर सकते थे, पर आपने उन सब पर रहम फरमाया। क्या वजह थी उसकी? एक और वजह रहमदिली के अलावा,
और वो वजह है डिप्लोमेसी ऑफ द प्रॉफिट। द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुड सी कि अगर मक्का में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई जुल्म करते तो पूरे अरब में ये बात फैल जाती कि मुसलमान जिस शहर को फतह करते हैं वहां पे बहुत कत्ल गारत करते हैं, वो लोग फिर मुसलमानों के खिलाफ लड़ते हैं। पर रसूलुल्लाह ने जब मक्का के लोगों को माफ कर दिया तो दैट न्यूज स्प्रेड अक्रॉस द अरेबियन पेनिनसुला एंड एवरीवन रियलाइज्ड दैट इफ वी स्टार्ट सपोर्टिंग द मुस्लिम्स, इफ वी विल फाइट विद द मुस्लिम्स विल डिस्ट्रॉय अस, बट इफ वी want peace and if we live happily with the Muslims, then the Muslims will not harm us. In fact, after converting to Islam, Makkah remained completely peaceful and completely prosperous. This was the message, the subliminal message that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam indirectly gave to the people of the Arabian Peninsula, to the Arabs, that Arabs, if you do peace with us, we will not hurt you. And the example for that is what Rasulullah sallallahu alaihi wasallam did in Makkah. So we see that as probably the greatest and most far-sighted example of the diplomacy of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Last and not the least, but in fact the greatest, is that after the conquest of Makkah, the next entire year, I think this was 9th after Hijri, is dedicated to sending letters and messages to different kings and different leaders and different rulers across the world. उसको जिन जिन जगहों का अरबियों को पता था, उसमें ईरान शामिल है, उसमें रोम शामिल है, उसमें आपका ये शामिल है, अफ्रीका शामिल है। हर जगह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना खत भेजा, अपने पैगाम भेजा। अरब के इलाकों में, नजरान में, बहरीन में, ओमान में, यमन में, जितने इलाके आप हैं, इराक में, सबको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैगाम जो हैं वो भेजे। और इस साल इतने खत भेजे गए और इतने वफ्द बोलते हैं डेलीगेशन को, और वफूद इसकी जमा है, सो डेलीगेशंस, ईयर ऑफ डेलीगेशंस। इतने डेलीगेशंस मुसलमानों के गए और इतने डेलीगेशंस मुसलमानों ने रिसीव किए कि इस पूरे साल को आमुल वफूद यानी कि ईयर ऑफ डेलीगेशंस बोला गया। इसमें बहुत से लोग मुसलमान हुए। इसके जो मशहूर वाकयात हैं उसमें से एक है नजरान के ईसाई जो हैं, क्रिश्चियंस जो हैं, द क्रिश्चियंस ऑफ द Arab region of Najran visited the Muslims, and there was a very famous event of Mubahila that took place. After that, we see a lot of the letters that were sent to very important kings, such as the letter that was sent to Iran. The king in Iran, let's change the color for this. The king in Iran was a guy called Khusro. Khusro title है, जैसे हम कहते हैं ना बादशाह, वो बादशाह कहते थे खुसरो। अरबी में हम खुसरो को बोलते हैं, अरबी में हम खुसरो को बोलते हैं किसरा, किसरा। खुसरो परवेज, ये ईरान का बादशाह था जिसको खत लिखा गया। अफ्रीका के अंदर हम पहले भी बात कर चुके हैं, नजाशी था, नेगस, उसको खत भेजा गया। रोम में जो लीडर था इनका, ईस्टर्न रोमन एम्पायर का, उसका नाम था हेराक्लियस। इसके अलावा मिस्र यानी कि इजिप्ट के अंदर खत भेजा गया एक बंदे को, उसका नाम था मुक़ौक़िस, उसको खत भेजा गया। इसके अलावा किसको खत भेजे, बहरीन में खत भेजे, पर मशहूर जो है वो यही है, मुक़ौक़िस को, हेराक्लियस को, नजाशी को और ईरान के बादशाह को जो खत भेजे गए थे। इन खतूत के ऊपर हम एक छोटा सा एक सेशन कर लेंगे, उसके अंदर हम इनको इंशाल्लाह क्विकली कवर कर लेंगे कि इनमें क्या कॉन्टेंट्स थे और क्या बात हुई।